नमस्ते ऑल लर्नड व्यूअर्स ऑफ यूट्यूब चैनल एनालिटिका आयुर्वेदा। आपका इस फोरम पर स्वागत है। और बहुत सारी भ्रांतियां हैं आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में, आयुर्वेदिक औषधियों की क्वालिटी, सेफ्टी, इफिकेसी के बारे में। और ये भ्रांतियां आम जनता से लेकर के बहुत बड़े वैज्ञानिकों तक हैं, बिकॉज दे आर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड about the process of the development of the Ayurvedic medicines, about the manufacturing and the productions criteria of the Ayurvedic medicines, about the rules and the licensing procedures for the manufacturing of Ayurvedic medicines, and many more things. So people think that this is the phenomenon where nothing is regularized or nothing is scientific, someone, and nothing is substantial, nothing is scientific, nothing is systematic. Some people think about it, and some people, knowing everything, falsely propagate it with their vested interest, with their own agenda, as a part of the conspiracy against the Ayurveda. The many kind of people and the many way of the working and the many styles and the many different things are all together working, sometimes in favor of Ayurveda, sometimes against Ayurveda. So if it is going on in the favor of Ayurveda, if the extreme hyperboles, no. Aggravative therapeutic claims of the efficacy, no. I say no. That should be rational, that should be substantial, that should be under the validation process. And in the same way, if the criticism, and that is also only the hypothetical criticism, only criticism for the criticism, only to avoid this Indian knowledge and its inherited fundamentals and the well-established doctrines, just for the sake of the name of the science which is just 300-year-old, that is also big no, not at all acceptable. So here is the need of the balance, and that is the sign and symptoms of a civil society, and a good scientist, and a good doctor, as well as a good administrator, as well as a good educationist, or even, after all, the common citizen, right from mass to class. So, let us start. First, how Ayurvedic medicines were developed. So, this process of the development of Ayurvedic medicine, or making a formulation, or in knowing a therapeutic efficacy of a single herb or a single mineral metal, or its combination, and in combinations also in the different proportion, and in the different dosage forms. Right now I am not going to talk about all that, because that is a different issue, and that should be addressed to all our learned viewers in the due course of the time. We are just servicing you since last 4 months, and meanwhile we are getting a lot of encouragement from your end and a lot of demands that this kind of the video and on this title video should be there. But meanwhile we also need your encouragement in the form of the subscription, in the forms of the increase in the watching hours, and so that YouTube may emphasize, may understand, may perceive the significance of this YouTube channel, what we are talking, and may propagate it by its own, not by the WhatsApp circulation. But when YouTube promote it, then we will be at the higher canvas and having the very good reach among the everywhere in the globe. So, come. So, Ayurvedic medicines were developed after a very thoughtful, experiential process of the Ayurvedic physicians.
with the trial and error method, with the observational therapeutics, observing the animals of the forest, observing the habitats of the civilization, observing the common practices of any civilization, or either in the deep forest or in a rural or anywhere else, or any part, any geographical division, I may say, right? So, and of course their own thought processes, their pratyaksh anubhav, pratyaksh praman, aptopadesh, and they developed Ayurvedic formulations. And all Ayurvedic formulations which are quoted right from the Agnivesh Tantra, we may know that there is a Charak Samhita, to the Tika of the Charak Samhita written by the Acharya Gangadhar Kalptaru, Tippadi of the Chakrapani, then the Chakradatta, from Sushrut Samhita to the recent one, Himant Sangra, Dalhana, etc., etc. I mean to say, if you come to the Bhaishaj Ratnavali, the 18th century book, and in that 18th century book by the compilation of the Govindas Sen ji, it is a good number of formulations are there, and that has been classified under the headings of a disease concern and then the remedies available for that particular disease. A good formulary, and its name is indicating Bhaishaj Ratnavali. Then there is a compilation Bharat Bhaishaj Ratnakar. Then there is a compilation Ras Yog Sagar. Out of in these three, almost all formulations of Ayurveda are there. But what is my point today? My point today is, have you heard anyone that this formulation of the Agnivesh Tantra, this formulation of the Charak Samhita, this formulation of the Sushrut Samhita, condemned by the following Acharya, who is writing the commentary or who is doing the Pratisanskar, or even the nowadays person, since even the 50 year of Ayurveda, that no, this formulation of the Ayurveda should be banned for the production. This formulation of Ayurveda should not be available into the market. This formulation of the Ayurveda or this herb should be banned and it should not be anywhere. Then these things are required. Okay, how we can do it and how is it is possible? Is it possible? Have you heard? My simple question, have you heard about this? क्या आपने सुना है कि कोई भी आयुर्वेदिक वनस्पति सिंगल या मिनरल मेटल मार्केट से विड्रॉ कर ली गई? मुझे यहाँ थोड़ी सी सावधानी रख करके ये बोलना पड़ेगा कि एक व्यवस्था भारत सरकार ने आधुनिक समय में ले आई शेड्यूल E1 की, जिसमें कि कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस और कुछ जो मिनरल मेटल्स हैं उनको ये कहा गया कि आप बताइए कि ये है इसमें, ये नहीं कहा गया है कि इसको आप मार्केट से बाहर कर दीजिए। लेकिन वो कंस्टिट्यूट करता है लेस देन 1% ऑफ द फॉर्मुलेशन। 99% आयुर्वेदा के जो फॉर्मुलेशंस हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता के साथ अपने बायोमेडिकल मेडिसिन के फ्रेंड्स या एलोपैथिक मेडिसिन के फ्रेंड्स को, या कोई भी एक सामान्य जनता से लेकर के उच्च स्तरीय क्लास तक, चाहे वो कैबिनेट सेक्रेटरी साहब हों, चाहे अडानी और अंबानी साहब हों, चाहे टाटा हों, कोई हो, मेरा मतलब है कंप्लीट कैनवस, फिल्म स्टार से लेकर के क्रिकेट स्टार तक। कभी आपने इस पर सोचा? अभी तक जो मेरे पास डाटा मुझे इस सूक्ष्म यंत्र में दिख रहा है, 462 withdrawals has been done. 462 post marketing withdrawal of 462 medicinal products because of their untoward effect to the human being.
Before marketing, several phases of trials were done. It's a 8 to 12 year protocol. Phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. A lot of preclinical and even several researches has been done to develop a new molecule. And in this short history of the allopathic medicine, up to the 2016, there are the 462 medicinal products has been withdrawn. And if you go to the Wikipedia, is just a compilation as talking, but here is also a good number. And if you go to the publications, so here is by J.L. Laxine in the 2014, and then again here is the I.J. Anakpoya 2016, and a lot of medicinal withdrawal and the recall, new proper evaluation, orders, a lot of things are there. So my point is here that these allopathic medicines, history of the 200 years, yes, up almost, not more than this, 462 withdrawals are on record. But in this 5,000 years of history, even 5 herb or the 5 formulations are not in the category of withdrawal. There are changes in the formulation, addition, deletion, as per the need of the disease, as per the need of the diseased, but nothing is complete withdrawal. And just I am saying you those Schedule E1 drug, that also has not been withdrawn from the market. There is a need of precaution only by this to knowing for the knowledge of the consumer that these are there, and you have to take it cautiously with the help of under the guidance of Ayurvedic physician. So why I am talking this about all this? So because here there are some person known as Indian hepatologist, he is just trying to defame the Ayurveda medicines, that Giloy is hepatotoxic, Ashwagandha is hepatotoxic, Haldi is hepatotoxic. How? I don't know when, in which laboratory he has developed all this data. Certainly you have not identified a proper plant species. I am not denying the science, but I am suspecting the material you have taken, and you are reporting the hepatotoxic material. See here, even the single herb out of these millions of the herbs of the nature, or you can say the Mother Earth, from sea to the mountain or the any geographical region, lakhs of plants are vegetations available. But why Ayurveda Acharyas have selected almost 700 only, which are very much popularly quoted. Nowadays we are trying to develop some more, add some more plants and the headings of the Anukta Dravya. Not we only, even the National Institute of Foundation, NIF, National Innovation Foundation, NIF, of the Ministry of Science and Technology, they are also working to establish the therapeutic value or the medicinal values of the some unknown plants not quoted in Ayurveda. And they are working on this line. So, my strongest point is our drugs, our formulations, I mean Ayurvedic herbs used in Ayurveda as a medicine, formulations indicated in Ayurveda as a medicines are time tested, well experienced. They have developmental process, also the part Sanyojan and the many more things which I can't cover in this video, but certainly a day will come when I shall cover it all for our all Ayurvedic friends. But this I am preparing for common man, so I am not going into that detailed technicality. So my simple submission to you all that believe on Ayurveda,
बिलीव ऑन द विजडम ऑफ द इंडियन ऋषिज, भारतीय ऋषियों के ज्ञान पर भरोसा करिए, गर्व करिए कि उन्होंने जो वनस्पति जिस औषधि उपयोग के लिए बताई, जो फार्मूला, जो औषधि पाठ संयोजन किया, जो औषधि बनाई, किसी विशेष परिस्थिति, किसी विशेष व्याधि के लिए बनाई, और उसमें उन्होंने ढेरों परिवर्तन किए। आप कोई भी उठा करके देख लीजिए, भारत भर से रत्नाकर से रस योग सागर तक आपको एक ही नाम से 10-10 औषधियाँ मिलेंगी। आरोग्यवर्धिनी रस के 10 पाठ मिल जाएंगे, इवन त्रिफला चूर्ण के 5 तरीके के पाठ मिल जाएंगे। किसी भी अवलेह पर जाइए, किसी भी आंसू अवरिष्ठ पर जाइए, आपको भेद मिलेंगे जिसमें कि घटक में भेद होगा। तो वो सब क्षेत्रवाद से उसके हिसाब से होता था, विड्रॉल कोई नहीं है। और हमारी ये साइंस जिसको कि हम बायोमेडिकल साइंस कहते हैं, उसको पूरा सम्मान करते हुए उनका मानव जाति के लिए योगदान किसी भी चिकित्सा पद्धति से कम नहीं है, अपितु ज़्यादा ही है। लेकिन आपका जो सिस्टम है ड्रग डेवलपमेंट करने का, वो फ्लॉलेस नहीं है, उसमें अनेकों कमियां हैं। और फिर होता क्या है कि आप मार्केट में आ जाते हैं, फिर विड्रॉल पे जाते हैं, और कितने मनुष्यों का नुकसान करके जाते हैं, कितने बच्चों को अपंग बना करके जाते हैं, कितने लोगों को कंजेनाइटल एनोमलीज दे करके जाते हैं, कितने लोगों को कार्डियक अरेस्ट करा करके जाते हैं, कितने लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके जाते हैं, तब आप विड्रॉ करते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जो है वह संतुलित है, स्थापित है। यदि कोई दुष्प्रभाव आता है, या तो मैन्युफैक्चरिंग में गलती हुई है, या चिकित्सक के द्वारा डोज और ड्यूरेशन में गलती हुई है। औषधि अपने आप में निहायत नितांत वैज्ञानिक और प्रमाणित है। ऐसा एलोपैथी की ड्रग मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं कहा जा सकता। विड्रॉल तो उनके यहाँ एक प्रोसेस हो गई है, उसके अनेक रीजन्स हैं। कभी कभी हाई कॉस्ट भी है, नो टेकर, कभी, लेकिन अधिकतर साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स ड्रग रिएक्शन कोई भी हो। अभी वैक्सीन आई ना, सबने स्वागत किया वैक्सीन का, लेकिन क्या हो रहा है इस समय? पेरिकार्डाइटिस, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स, स्केलेटोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, क्या नहीं हो रहा है वैक्सीन से? और सारे विश्व के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। तो बस मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि आयुर्वेद की औषधियों पर, आयुर्वेदीय ज्ञान पर बिना एविडेंस के, और आप चलिए, हम तो बार बार कह रहे हैं कि आप ICMR की लेबोरेटरी में आ जाइए, और जो गिलोय को आपने यूज किया है उसको प्रमाणित करा लीजिए AFI आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया के मापदंडों से कि वो गिलोय ही है, और उसका आप एक्सपेरिमेंट करा लीजिए ICMR की लेबोरेटरी में, और फिर अपने ही पेपर को रिट्रैक्ट कराइएगा जिसमें आपने कहा है कि गिलोय हिपैटोटॉक्सिक है। 100% टाइनोस्पोरा कार्डिफोलिया हिपैटोटॉक्सिक नहीं है। बस आयुर्वेदिक औषधियाँ, फिर से पुनः आपसे निवेदन है कि इनकी खोज, इनका अन्वेषण एक सिद्धांत के तहत और हजारों साल की प्रैक्टिस के बाद वो लगातार चलती आ रही हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत तेज़ औषधि का विकास होता है और उससे तेज़ गति से औषधि वापस ली जाती है। आप देखिए, कोई भी डिजीज़ आ रही है, कोई भी मॉलिक्यूल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, दावा यही होता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, करता है, लेकिन 3 साल के बाद रिपोर्ट आती है कि नहीं, इससे तो ये बीमारी भी हो रही है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस में। फिर आप उसको विड्रॉ करते हैं। अरे आपके सिंपल रेंटिडीन के बारे में आपने क्या कहा? ऐसे में मेरे सामने खुला हुआ है, मैं 10-20 नाम पढ़ सकता हूँ, लेकिन नहीं, हमें आप पर उंगली नहीं उठानी है, हमें आपका सम्मान करना है, लेकिन आपको हम ये अधिकार भी नहीं दे रहे हैं कि आप बिना बात के बात हमारे ऊपर उंगली उठाइए। इसलिए मानव जाति के लिए काम किया जाए, आयुर्वेद को डिफेम करने का प्रयास बंद करिए, इसकी औषधियों पर और प्रामाणिकता ले आइए और इनको मानव जाति के लिए और ज़्यादा उपयुक्त बनाइए। आज इतना ही।
धन्यवाद, नमस्कार।